प्रश्नकाल माननीय उपमुख्यमंत्री। माननीय बाचस्पति महोदय, राज्य रे समुदाय 74,224 कारण 2023-24 आर्थिक वर्ष ठारू भारत सरकार को पत्र संख्या 11/2/2022 CD 1 ता 10/5/2023 अनुसार समस्त 10,416 मिनी अंगली जिलावारी निजस्व गृह नथिबा अंगनवाड़ी केन्द्रर विवरणी परिशिष्ट खरे प्रदान करागला। 2024-25 आर्थिक वर्ष ठारू मोट 50 गोटी अंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण पाई विभाग पक्षरु 12 लाख टंका प्रति अमी चिन्हट हो सारी एवं गोटी अंगनवाड़ी केन्द्रर निर्माण कार्य मध्य आरंभ होइछि। अवशिष्ट अंगनवाड़ी केन्द्रर निर्माण कार्य आरंभ करा जिवा पाई आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। जिला और ब्लॉक वारी एही 50 गोटी अंगनवाड़ी केन्द्रर तथ्य माननीय बाचस्पति महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय तांकर जो उत्तर रखिछंती मुझे गोटे कथा जानवा चाहिए जे आम राज्य रे 74,224 गोटी अंगनवाड़ी केन्द्र रही से 20,150 गोटी अंगनवाड़ी केन्द्र निजस्व गृह ना। उपमुख्यमंत्री महोदय को जे एठी आपणकर जो 20,150 गोटी अंगनवाड़ी केन्द्र रे गृह ना, निजस्व गृह ना, आपण मध्य आगुरी भी कही सारी जे एटा 12 लाख टंका 15 लाख टंका पर्यंत कराई। किंतु 24-25 आर्थिक वर्ष रे आपणकर 50 गोटी नूतन गृह निपार कि प्रथम कथा। द्वितीय कथा है जे जितेबले 20,150 गोटी अंगनवाड़ी केन्द्रर निजस्व गृह ना सेतेबेले केवल मात्र 50 गोटी अंगनवाड़ी केन्द्र 6 कोटी टंका 24-25 आर्थिक वर्ष रे दिया जाइछि एवं चलित आर्थिक वर्ष रे या अवशिष्ट जो अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक रहा 19,000 पाखापाखि 19,000 ऊर्ध्व अंगनवाड़ी केन्द्र गृह ना तापी कौन बजेट रे व्यवस्था करेंगे? धन्यवाद। माननीय उपमुख्यमंत्री। माननीय बाचस्पति महोदय, माननीय विधायक रमेश बेहरा दसपल्लार विधायक प्रश्न अनुजाई जो 20,150 निजस्व गृह नाही एथिरु 3,890 भड़ा घरे चलुची 10,400 एनएपी माध्यम रे जो आसी शिशु बाटिका 1, 2, 3 से स्कूल को ही प्रायोरिटी दौचु जो खाली अच्छी स्कूल रे जगह अच्छी ताकू प्रायोरिटी दबु एवं जो 12 लाख टंका जोगे देइछु एवं से दिन भी मु माननीय बाचस्पति महोदय पूर्वतन प्रश्न उत्तर बेले भी अंगनवाड़ी उपरे कही थी कि अंगनवाड़ी जोठी आगरू 5 लाख थिला तापरे 7 लाख हैला जणैले जहाँ वर्धित मूल्य अच्छी ताकू आमे जोगे देबु एवं एई थर जो सप्लीमेंटरी बजेट रे जो प्रावधान रही पाखापाखि 10,200 अंगनवाड़ी को आमे संपूर्ण करने कि तापाई आर्थिक व्यवस्था करुचु। माननीय विधायक श्री प्रदीप दिसारी। आपणकर माध्यम रे केते शिशु थिले सेठी गोटे अंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाई परिबो? मंत्री मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदय कहिबे। माननीय उपमुख्यमंत्री। हमें राज्य रे नुआ अंगनवाड़ी खोलिवा पाई जहाँ प्रस्ताव आसीची ताकू आमे केंद्रीय जेहेतु 60-40 रे अच्छी तेणु आमे केन्द्र को जणे देइछु एवं सेठी अप्रूवाल आसिला परे आमे पुनी नुआ स्कीम रे संपूर्ण 12 लाख टंका जोगे देउचंती। तेणु पीवीटीजी एरिया रे अंगनवाड़ी खोलिवा पाई जदि माननीय विधायकों पाखे किसी प्रपोजल थिबो तो देले मते लागुचे एटा पीएम जन्मन रे आमे प्राय जगह रे खोली परिबा। माननीय विधायक श्री
प्रदीप साहू। माननीय बाचस्पति महोदय, अंगनवाड़ी गृह संपर्कित आलोचन टंका 5 लाख टंका थिबा समय घर किसी आरंभ ही अधार पड़ी 7 लाख टंका थिबा बेले मध्य घर अधारे पड़ी ता संपूर्ण हो पारु नाही। निश्चित भाव रे से समय जो एस्टिमेट होता ताकू नहीं सरी पारु नाही। विभाग अधिकारी मानकर कौन चिंता अच्छी ता जानी पारना। द्वितीय प्रश्नटी है चतुर्पार्श्व एवं मध्य खाली पड़ी मेला पड़ी जोड़ा स्कूल कंपाउंड भीतर अच्छी तो ठीक अच्छी जो स्कूल कंपाउंड बाहर अच्छी छोट छोट छुआ मैंने जाउछंती सेमानक कौन परिश्रागार किंबा पाइखानार व्यवस्था ना। गोटे व्यवस्था एवं पूर्ण होती मु कहूँ विशेष भाव में बेगुनिया बुलगढ़ जिते गुड़ी अंगनवाड़ी केन्द्र थिला यही चलित वर्ष सबु जगार नलकूप खनन कर दि जाए। चतुर्पार्श्वर प्राचीर जगह माड़ी बसुंट एवं पाइखाना एवं जोड़ा अधा हो पड़ी से केमती पूर्ण हम माननीय मंत्री महोदय ए बाबद सठिक तथ्य देवे गृह को। माननीय बाचस्पति महोदय 22-23 रे सेटा 12 लाख एवं एबे तापाई आमे 15 लाख टंकार व्यवस्था करूछु एवं आगकू ताकू आहुरी बढ़ेवा पाई कि मु आर्थरक भी गृह रे कहितली 25 लाख पर्यंत बढ़ेवा पाई आम पाखे प्रपोजाल्स अछि। जो अंचल रे अंगनवाड़ी गृह अर्थ अभाव बा इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड अनुजाई सेटा हेई पारुनी जदि आपण माने ताकू सीढ़ी जदि मिनिमम पानी बिजुली घर पाचेरी ये सब न रहिबो ताहले तो सक्षम अंगनवाड़ी हेई परिबनी। तेणु आमे ओडिशार जेतिकी आम पाखे गृह एवं जेतिकी जागा अछि मु तो माननीय विधायक समस्त विधायक माननकु अनुरोध करिवि निज अंचल रे अंगनवाड़ी गृह को करिवा पाई विभाग जेतबले निजस्व खर्च रे जागा किणी करिवा पाई कि प्रस्तुत हेलानी आपण माने निज अंचल रे थिबा अंगनवाड़ी आमे सक्षम अंगनवाड़ी जरिया रे आपण जानिथिबे आमे तांकू पोषण बाटिका सहित अन्यान्य भित्तिभूमि पाई 39,000 टंका पोषण बाटिका पाई 10,000 टंका एवं अन्यान्य भित्तिभूमि पाई 39,000 टंका जोगै दिया जाउची। एवं मु भाबुची जो जो जगार पाचेरी नाही एवं पाचेरी नथिबा कारणरू रास्ता को पिला पळे आसुचंती मेन रोड रो दाढ़रे अछि बा पछरे जलाशय थिबा को लेखिले भी आमे दबु। धन्यवाद। माननीय विधायक श्री दुष्मंत कुमार स्वाई। मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन दा नेक्स्ट ये 242 दा माननीय विधायक श्री मंगू खिलो। माननीय बाचस्पति महोदय, आम चित्रकोंडा निर्वाचन मंडली रो प्रत्येक ब्लॉक संपूर्ण बिल्डिंग नहीं एवं से भली कोरकोंडा रे 177टा सेंटर रु 19टा सेंटर रे बिल्डिंग नहीं नॉन बिल्डिंग है कि माननीय बाचस्पति महोदय सबू सेंटर गुड़ाक का घरे को कुड़िया घरे को आम से जो स्वाभिमान अंचल बा विचिनांचल जो पिला माने अंगनवाड़ी शिक्षा से माने शिक्षा लाभ पाई पारिबे। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय बाचस्पति महोदय, माननीय विधायक जो प्रश्न उठेले मु भाबुची से प्रश्नर उत्तर मु आरथरक भी देइथली एथरक भी दउची कि पीवीटीजी अंचल रे जो 90टी अंग तेणु याकू द्रुत गति रे जेहेतु केंद्रीय अनुदान 12 लाख टंका एठी अछि आमे द्रुत गति रे जदि जोठी कम्युनिटी घर अछि सेठी होची जदि आमे निजस्व घर देई देबो जेते जल्दी आपण घर देबे विभाग सेते जल्दी आर्थिक व्यवस्था ऑलरेडी पहुंची सारी केवल जागा चिन्हट प्रक्रिया पाई कि बहुत अंगनवाड़ी केन्द्र निजस्व गृह को जाई पारुनी। सरकार प्राथमिकता अच्छी कि अंगनवाड़ी को निजस्व गृह दबा एवं जो जागा जोगई देवे ताहले चित्रकोंडा रे जल्दी रे आमे ये गृह गुड़ाक संपूर्ण कर परिबा। माननीय विधायक श्री ध्रुवचरण साहू। दृष्टि आकर्षण करने चाहूँगी आज गृह रे जो अंगनवाड़ी गृह निर्माण संपर्क में आलोचना चलती
गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होची नुआ अंगनवाड़ी केन्द्र पई आपण 12 लाख टंकार आर्थिक अनुदान मंजूर कले बहुत स्वागत योग्य पदक्षेप किंतु अनेक अनेक जिले में MGNRGA रो जो मटेरियल कंपोनेंट पैसाटा ठीक समय आसुना विशेषकर मु केन्द्रापड़ा जिला कथा कहबी आमर 4 वर्ष हम केन्द्रापड़ा जिले में MG 60-40 रेसियो को आसी पारुना जो कारण भाई सबुठ बेसी क्षतिग्रस्त होती अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक तेणु अधा केवल डिपार्टमेंट जी पैसा देती से पैसा जी बाट जा सब रही जाइए। माननीय बाचस्पति महोदय, माननीय विधायक जो अर्ध निर्मित अंगनवाड़ी केन्द्र आउपरे जो एवं जोठी जागा नहीं आमे जागा किनिबा पई प्रस्तुत हेलेनी एवं जोठी आवश्यक 7 लाख रे अधा निर्मित हे अच्छा आसी गले विभाग ए अर्थ जोगे दो कंप्लीट करबा पई जहा दरकार हबो जोगे माननीय विधायक श्री दुर्गा शिक्षक लक्ष्यपति दीदी करिथिबारु मोर एठी सीधा प्रश्न अंगनवाड़ी कथा जेहेतु अच्छी ये अंगनवाड़ी गुड़िक सक्षमता पाई टेक्नोलोजी व्यवहार होछि ओ सक्षम अंगनवाड़ी सुविधा कौन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर देवे। माननीय बाचस्पति महोदय, ओडिशा रे असम आप द्वारा अंगनवाड़ी गृह कार्यर तदारख पाई व्यवस्था करा जाइछि जोठी जागा नहीं किए अधा गढ़ा अवस्था रे अच्छी के संपूर्ण हबो ताकू आमे आरंभ करिचु एवं जियो टैग फोटो राज्य रे सक्षम अंगनवाड़ी रे कथा मान्यवर विधायक उठेइचंती आमे पाखापाखी जो अंगनवाड़ी केन्द्र रो घर। Thank you so much. A big round of applause for the entire journey that Global Energy Leaders Summit has undertaken so far. And we would also like to inform that this is in fact the first net zero event in Odisha. A big round of applause for that. May I now request Shri Kanakvardhan Singh Deo, Honorable Deputy Chief Minister, who is leading Odisha's energy transition agenda, and it was his discussion with former British Prime Minister Mr. Tony Blair that sowed the seeds for this visionary summit to deliver the welcome address and the vision-setting address. Jai Jagannath, dignitaries on the dais, Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi ji, Honorable Union Minister, New and Renewable Energy, Shri Prahlad Joshi ji, Honorable Minister of Power, Shri Ashish Sood ji, Honorable Minister of State for Energy, Government of Rajasthan, Shri Hiralal Nagar ji, Chief Secretary, Odisha, Shri Manoj Ahuja ji, Principal Secretary, Energy, Shri Vishal Dev, Senior Advisors, Energy and Climate, Tony Blair Institute for Global Change, Mr. Pierre Noel, Professor Anup Singh of IIT Kanpur, distinguished MLAs in the audience, dignitaries, officers from Government of Odisha, representatives of Tony Blair Institute, researchers from IIT Kanpur, and the officers from the various states who are present here today. I, on behalf of the state government, would like to welcome all of you to the land of Lord Jagannath. It is my profound privilege to extend heartfelt gratitude to each of you for making this journey to Odisha to grace this Global Energy Leaders Summit. Your presence here today illuminates not just the gathering but our collective vision for a sustainable energy future. I am deeply honored to stand before you in the inspiring presence of our Honorable Chief Minister, whose visionary leadership and unwavering commitments to Odisha's development continues to guide us towards new horizons of progress and prosperity.
Shri Prahlad Joshi ji, we are deeply honored by your presence and grateful to you for your leadership in steering India's renewable energy revolution. To our distinguished energy minister from Rajasthan and Delhi, your insight and experiences are invaluable as we chart the path forward together. The fact that we have traveled all the way to Puri speaks volumes about your commitment to collaborative action on energy transformation. This convergence of visionary leadership in this land of Lord Jagannath is indeed auspicious and fills up with great hope. Before our discussions begin, I wish to share why India's first GELS started from Konarak yesterday and has today moved to Puri. Konarak has always been more than a monument. It is a place where art, science, and power of nature come together. Our ancestors understood the language of the sun, the rhythm of the tides, and the flow of the wind. They used this knowledge to build a temple that is precise, imaginative, and timeless. Konarak reminds us that India's relationship with energy did not begin in modern times. It has been part of our civilization for centuries. So it is fitting that our journey towards a clean energy future begins at the Sun Temple, the Arkha Khetra, where promises meet winds, tides, and rich mineral strength. From Konarak, the summit has now moved to Puri. Every year, Puri shows us the meaning of collective strength with the Rath Yatra. This spirit is central to our energy transition. India will move forward when states, industries, innovations, and communities pull in the same direction with shared resolve. Odisha has a history of taking early steps in the power sector. Whether in reforms, grid management, or preparing for renewable integration. We now build on this foundation with a clear vision. By 2030, we aim for a strong shift towards renewable energy across industry and agriculture. By 2036, when Odisha turns 100, we want to be a leading center for clean energy, manufacturing, and green hydrogen. By 2047, we hope to anchor the net zero industrial ecosystem based on cleaner fuels, circular systems, and innovation. These goals are not statements of ambition. They are commitments we intend to deliver through partnership, policy clarity, and steady progress. GELS has been created with one idea in mind: energy's transition must be built together. States need a space where they can exchange solutions, test ideas, and learn from one another. Industry needs a platform to bring innovation and investment closer to national goals. And global partners need an open and trusted environment to collaborate with India. This summit provides that space. GELS is designed to show that India welcomes new ideas, new technologies, and long-term partnerships. The summit aims to be net zero in its operation using eco-friendly material and offsetting its footprint through plantation and reuse. We are grateful to all our partners, including
institutions like Tony Blair Institute and IIT Kanpur for helping shape this platform of cooperation. As we begin this important summit, I want to share a simple thought. Real change grows when people move together in one direction. That is the strength behind GELS, brings together the center and states, industries and researchers, global experts and local communities. From the radiance of Konark to the sacred shores of Puri, a new chapter of India's energy journey is opening today. Odisha is honored to host this beginning and will continue to play its part with responsibility and resolve for future GLS. Thank you all for joining us. May Lord Jagannath bless the summit with wisdom, cooperation and success. Thank you. Jai Jagannath. Thank you so much, sir, for your warm welcome and also for explaining and shedding light on the vision behind GLS 2025. Ladies and gentlemen, we are very delighted to have representation from 7 states for this summit today, despite flight disruptions. And we are very honored to have the presence of Shri Ashish Sood, Honorable Minister of Power, Delhi, who's also in charge of home education, urban development, higher education and training, and technical education. A seasoned political leader and social activist with an extensive record of public service, he believes that clean energy is not tomorrow's dream, but today's responsibility. May I now request him to address this gathering. Good morning, ladies and gentlemen. Honorable Cabinet Minister, respected Shri Prahlad Joshi ji, Honorable Chief Minister Shri Mohan Charan Majhi ji, Honorable Deputy Chief Minister Shri Singh Dev ji, Power Minister from Rajasthan, Honorable Shri Hiralal ji, Chief Secretary Odisha, Shri Manoj Ahuja ji, Professor Anup Singh ji from IIT Kanpur, representatives from Bill Gates, Tony Blair Foundation and the Principal Secretary Power Odisha government, and friends from industry and media. At the outset, I extend my gratitude to the government of Odisha for hosting all of us at GELS Puri. The enthusiasm, expertise and diversity gathered here gives me a confidence that this forum will not become ceremonial formality, but a genuine solution-driven platform for India's power sector. It must be seen in sync with existing power infrastructure, especially during the critical transition phase. The next decade of India's energy journey will depend on how effectively we modernize, stabilize, digitalize, and secure our grids while integrating rising demands, exploding EV loads, and rapid. Delhi holds a unique position in this national conversation. As a landlocked megacity with one of the highest consumption densities in India, we have no coal or hydro, but we face some of the steepest demand curves in the country. Peak loads intensified by the urban heat island effects in summer push our networks to its limits. Our urban settlements planned decades ago now require deep rethinking. Bob discussed reducing energy consumption by 50% by redesigning cities
into 15 minutes urban models. It is a reminder that energy planning, it is a reminder to all of us, and especially the experts, that energy planning is also city planning. The way dense cities evolve will determine the shape of the energy transition. Delhi, because of its constraints, is naturally positioned to lead the urban energy transition. These constraints have pushed innovations. We deployed India's first and South Asia's largest BESS, battery energy storage system in Kilokri, Delhi, proving that even a congested urban village can host cutting-edge storage. We introduced Delhi's digital twin architecture in Janakpuri, which monitors the grid in real time, predicts faults, and reduces outages before even the citizens notice them. The question we grapple with are the same questions which are faced by every state. How do we plan for the long-term and short-term power sufficiency? How do we build state level and national level power master plans that reflect renewable variability, climate risk, and evolving demands? How do we build storage ecosystem that stabilizes the grids? How do we integrate EV charging without overwhelming feeders? How do we prepare for cyber risk on an increasingly digital grid? And how do we develop distributed energy markets, peer-to-peer solar trading, backchain-based energy settlements, community storage that complement the traditional grid instead of disrupting it? These are not theoretical concerns, but operational realities, and no state is alone. Another area that deserves deeper national rethinking is the role of interstate partnership, for which we should all thank Odisha government for planning this GELS. Delhi simply cannot generate the volume of green energy it needs. We must explore city-to-city grid corridors. This model can reduce overall system costs while supporting national renewable integration. It also aligns with recent remarks of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in Hyderabad, that the government is examining the possibility of opening nuclear sector to the private participation. Such reforms can reshape India's baseload architecture in the coming decade, and states must prepare for this evolution. Over the next 2 days, I hope we emerge not only with the rich discussion, but with clarity. We need a unified cybersecurity framework for SCADA, AMI, and EV chargers. We need PPP models to expand underground cabling and digital infrastructure. We need a roadmap to integrate rooftop solars, storage, and demand-side management at scale. And we need an actionable, ambitious GELS Puri declaration that advances India's transition in a realistic manner. Delhi has come to this forum not only to showcase its innovations, but to learn from every state represented here. Together, I believe we can craft blueprints for India's next generation grid that is clean, reliable, affordable, and resilient. I look forward for the next 2 days of meaningful dialogue and collaboration, and thank you for inviting Delhi here, for sharing its views, and I hope the discussions here in the next 2 days will make this learning a permanent feature, with GLS leading the way, and Odisha government and the Honorable Deputy Chief Minister and the Energy Minister, who has taken up the lead, leading the way for the clean and self-reliant states in this field of power. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Delhi. Thank you so much, sir, for your positive address and your valuable insights.
Ladies and gentlemen, we have with us on stage Shri Hira Lal Nagar, Honorable Minister of State, Energy, Rajasthan. Under his leadership, Rajasthan is working towards becoming an energy surplus state with a strong push to expand solar generation capacity. The state has been advancing efforts to enhance energy production and attract large-scale renewable investment, positioning Rajasthan as a major force in India's energy transition. May I now request him to address this gathering. Let's welcome him with a round of applause. आज हम सभी देश के इस पूर्वी राज्य उड़ीसा में ग्लोबल एनर्जी समिट के माध्यम से मिल रहे हैं और मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन चारण जी मांझी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस सूर्य नगरी में, जगन्नाथ जी की नगरी में सबको बुला करके और हमें दर्शन का अवसर भी दिया और यहाँ बुलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में न्यू रिन्यूएबल मिनिस्टर सम्माननीय प्रहलाद जोशी जी, कनक वर्धन सिंह जी उप मुख्यमंत्री उड़ीसा, आशीष सूद जी ऊर्जा मंत्री दिल्ली प्रदेश, मनोज आहूजा जी चीफ सेक्रेटरी, प्रोफेसर अनूप सिंह जी आईआईटी कानपुर से, विशाल कुमार देव जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऊर्जा और टोनी ब्लेयर फाउंडेशन के सभी सहयोगी। आज हम सभी को एक सुखद अनुभव भी हो रहा है और इस उड़ीसा राज्य में यहाँ सूर्य नगरी में आकर के और जो हम ग्लोबल एनर्जी समिट के माध्यम से एक चर्चा कर रहे हैं कि देश में किस तरह से हम इस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे राज्य से सहयोग करके और कैसे इसको आगे बढ़ाएं और कैसे हमारी आने वाली जो चुनौती है 2047 की, उसको पूरा करने के लिए हम सब मिल कर के और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये चुनौती जो है वो पूरी होगी। और इस चुनौती को पूरा करने के लिए मैं हमारे न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि राजस्थान उस मोदी जी की जो चैलेंज है, उनका जो विजन है, उसको आगे बढ़ाने में निरंतर काम कर रहा है। ये सूर्य नगरी में सूर्य देव भगवान यहाँ से उगते हैं, लेकिन इन सूर्य भगवान का आशीर्वाद जितना राजस्थान को है, जो हमारा राजस्थान का पूर्वी भाग जो रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर अपार भूभाग है, कभी वो रेतीले टीले हुआ करते थे, आज वो रेतीले टीले सोना उगल रहे हैं और राजस्थान में सूर्य की आशीर्वाद से वहाँ पर हम लगभग 32,000 मेगावाट का सोलर